There. Good afternoon to all those who are joining me now. I'm Arvind. We continue to watch CNN News 18 and our top focus is Arvind Kejriwal's questioning by the Central Bureau of Investigation. Delhi Chief Minister and Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal's CBI appearance as a witness in the liquor policy scam case is currently going on. Ahead of his questioning, the Delhi Chief Minister visited Rajghat to pay homage to Mahatma Gandhi. Several Aam Aadmi Party leaders also took to the streets of the capital in a massive show of strength ahead of the CBI's quizzing of Kejriwal. Earlier today, Kejriwal also accused the Bharatiya Janata Party of ordering the CBI to arrest him and the CBI action being a result of political vendetta. This comes a day after he met several Aam Aadmi Party leaders in Delhi to chart his further course of action regarding the CBI inquiry. Supporting Kejriwal's arguments, Punjab Chief Minister Bhagwant Mann said that the inquiry is being held to break the Aam Aadmi Party and the party leaders are not afraid of being arrested. दिल्ली की तरक्की को देख के पूरे देश के अंदर एक उम्मीद जागी कि दिल्ली का विकास हो सकता है तो बाकी भारत का भी विकास हो सकता है। हम भारत वालों को, भारतवासियों को जितना मर्जी परेशान कर लो, लेकिन भारत रुकने वाला नहीं है। तुम्हारी इन गीदड़ भभकियों से भारत रुकने वाला नहीं है। भारत तो आगे बढ़ेगा। सबसे पहला सवाल उठता है कि क्या केवल मनीष सिसोदिया ने ये एक्साइज पॉलिसी बनाया या इसके पीछे कुछ और लोगों का हाथ था? और स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न उठता है और जांच एजेंसी जानने की कोशिश करती है कि हु इज और हु रादर वाज द किंगपिन ऑफ द दिल्ली एक्साइज लिकर स्कैम। आज सुबह भी जब हम राजघाट गए तो हमने भी कहा कि जो भ्रष्टाचारी पापी लुटेरे उनकी तुलना महात्मा गांधी से की जा रही है, ऐसे वो पापी भ्रष्टाचारी लुटेरे आपके पास आएंगे तो बापू इन्हें क्षमा कर देना। तो अरविंद केजरीवाल यहाँ आके जो ढकोसला कर रहे हैं, पहले उन्हें ये जवाब देना चाहिए कि जो उनके प्रवक्ता ने कहा है कि आप महात्मा गांधी हैं क्या? आपने दिल्ली की जनता को लूटा है, आप पापी हैं, आपने युवाओं को नशे में धकेला है। आम आदमी पार्टी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, इस रफ्तार से आज तक आजाद भारत के इतिहास में कोई पार्टी नहीं बढ़ी। ये शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हजम नहीं हुआ। इसके चलते आज तमाम एजेंसियां ईडी सीबीआई को छोड़ दिया है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। अरविंद केजरीवाल के तमाम करीबी साथियों को पकड़ के जेल में डालना है। अब आप सोचिए, अगर अरविंद केजरीवाल जी जेल चले गए, अगर अरविंद केजरीवाल जी को इन लोगों ने बंद कर दिया, तो आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य होगा? देखिए, ये तो बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता से प्रधानमंत्री मोदी जी को डर लगता है। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जा रहा है। एक ऐसे मैटर में जहां पे कहते हैं हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, लेकिन 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत अभी भी देश के सामने वो नहीं रख पाए हैं। अरविंद केजरीवाल के 8 साल के शासन में अनेक भयंकर घोटाले हुए हैं, चाहे वो शराब का घोटाला है जिसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, तो अरविंद केजरीवाल के शासन में लगभग 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले पिछले 8 सालों में हुए हैं। एजेंसी जांच कर रही है, अनेक मामलों में एफआईआर दर्ज हो गई है और आपको लगता है कि एजेंसीज आपको फंसा रही है तो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में दरवाजे खुले हुए, आप अपनी बात वहां रख सकते हैं। So all my colleagues have spread out. Rupashri Nanda is tracking the Aam Aadmi Party. Akash is also keeping an eye on what's happening in Delhi's politics. Ananya and Anvit are keeping an eye on the Central Bureau of Investigation where the questioning is going on. Ananya, any update from inside? Questioning has been on for almost 2 hours now. Well, there's certainly no update from the Central Bureau of Investigation officers at this point of time, but the questioning is still underway. The questioning is continuing with Mr. Arvind Kejriwal. You know, it's already, around 1 p.m. and we might expect that, you know, for a brief break, Arvind Kejriwal can be given out a lunch break also around 2 to 2:30, which generally happens in the course of investigation. If I take you through the visual right here, and I'll ask my camera person Rahul Malhotra to actually show you these visuals. This is the Central Bureau of Investigations building where exactly this questioning is taking place. Remember that around 11:30 to Arvind Kejriwal came in
and you know, the questioning had begun. We have already taken our viewers through the aspects of questioning, which would be the meeting that took place at, you know, Arvind Kejriwal's residence, where Satyendra Jain, Manish Sisodia and Manish Sisodia's secretary Mr. C. Arvind was present, and magically from 5% to 12% profit margins were changed. Another big aspect that then for the Central Bureau of Investigation would be looking into is how this policy was actually given out a green signal, because remember, the draft of this policy was available with certain people in the South lobby even before the policy was released. Another big charge that is there from the agencies regarding this policy is that emails were planted to make this policy look good in nature, and the public comments that were sought were actually you know, furbished by drafted emails, which were pre-drafted emails in fact, and by various people. And in fact, a very important charge that the Enforcement Directorate had actually given out when it was arguing Manish Sisodia's bail also was that, you know, if at all it was a good policy, then why? And in fact, whenever policy is created, right, you know, it is out in open, but this was a conspiracy that was hatched, and a follow-up is always a very, very important thing in a conspiracy, and that was done when you know, Manish Sisodia actually questioned Mr. C. Arvind as to whether these mails have been sent to the Excise Department email ID as public comments or not, and the same the response was given out by Mr. C. Arvind. So definitely many questions to be answered by the Delhi Chief Minister, because remember that no matter Mr. Manish Sisodia was the Excise Minister, but definitely the Chief Minister of the National Capital Territory of Delhi was also responsible for this implementation of this particular policy. That's exactly what the CBI's IO wants Mr. Kejriwal to answer about the missing files, about this FaceTime conversation that happened, about the overall policy that were agreed upon. What the CBI's IO wants to ask Mr. Kejriwal is whether he was aware of this conspiracy that was unfolding. If he was not aware, then how is it that over this video call he gave you know, his thumbs up to Vijay Nair, the main accused in this case, in the presence of another co-accused, Mr. Mahindru. Also, what the CBI has been asking is the way Mr. Mahindru's firm Indospirits, its application was initially rejected, and later Manish Sisodia's intervention got his application processed as well. Was Arvind Kejriwal aware of all of this? Was he aware of what was being done by his Deputy Chief Minister? As a witness, CBI says it wants Mr. Kejriwal's insight into this alleged conspiracy that was happening. Kejriwal, however, insists that this is a conspiracy to get him arrested, and I'm showing you there, this was a soundbite he gave to the media before he went inside the Central Bureau of Investigation headquarters. There are a lot of other political reactions also that came in, including Bhagwant Mann, who said that this is a conspiracy by the Bharatiya Janata Party, and that's something that the other leaders have said as well. Let's listen into the political reactions, and then I'll cross back to my colleagues on ground. किसी ने कहा कि जी स्कूल, दिल्ली के स्कूलों के बच्चे तो बहुत पढ़ लिख रहे हैं, वो तो इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, उनके माता पिता तो बहुत ही खुश हैं। अगर इंजीनियर डॉक्टर बन गए ये तो घर की गरीबी जो है खत्म कर देंगे। गरीबी खत्म हो गई तो पढ़ लिख कर ये सोचकर वोट डालने लगेंगे। सोचकर वोट डालने लगे तो बीजेपी को तो वोट ही नहीं देगा। तो कहते जी क्या करें? कहते जी जिसने स्कूल बनाया उसको अंदर कर दो। उन्होंने मनीष सिसोदिया को अंदर कर दिया। उन्होंने कौन सा किसी से पूछना है? जो भी आके कह देता है, तारीफ कर दे थोड़ी सी, उसके बाद वो साइन कर देते हैं। अभी वो कह रहे जी अरविंद केजरीवाल ये तो कर्नाटका में जा रहे हैं, ये राजस्थान की भी तैयारी कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की तैयारी भी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी हो आए, ये तो जी बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। तो गुजरात में भी हमारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी थी। तो कहते फिर अरविंद केजरीवाल को अंदर करने की जो है रिवाज शुरू कर देते हैं। इसी सिलसिले में आज उनको बुला लिया। यदि केजरीवाल जी ने कोई गलत नहीं किया तो आप सारे दस्तावेज या तो सब रख लीजिए, सीधा जवाब इस पे दीजिए। 10 सवाल होंगे, 20 होंगे, 50 सवाल होंगे, सबका खुल के जवाब दीजिए। बोल दीजिए मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए तैयार हूं। लेकिन हर चीज पे कोई और चीज कह देना, मोदी जी को गाली देना, बीजेपी को गाली देना, एजेंसी को गाली देना, पूरी भीड़ इकट्ठा कर देना जैसे एक अनशन पे निकले हुए हैं, ये थोड़ी ना उस घोटाले के जवाब देने की बात है, ये तो जवाब से भागने की बात है।